Hi everyone, what does this passage say? It is a very dense looking passage, I think with only 3 paragraphs and a lot of kachra. Will we handle this the way we handled our data-based passages in the earlier sessions? No. So what are we going to do? पहले तो ना देख लो किस बारे में. So आदिवासी and something, right, primitive. And even here I see primitive. Primitive. So they are discussing a term and then probably things related to that. Okay. So this can be something like sociological philosophy. Questions क्या है ये तो मैं जरूर से देखती हूँ पहले. No matter how the passage is. Why does the author write the primitive functioned as a fetish? Right? This is specific. Inference. Right? Then, next. Why does the author write this clearly could not be the case with India's experience? ओहो ये स्लाइड्स पे मैं ये हटाना भूल गई हूँ. जाने दो इनको. हाँ. Why does the author write this clearly could be okay? Specific. Inference. Which of these can be inferred? Later, we are playing only true false here. Right? And the last one, excerpt taken from what? ठीक है, ये देखेंगे इसमें क्या है. op-ed, journal on history, newspaper report, government commission. आदिवासी से रिलेटेड, आदिवासी का नाम मुझे दिख रहा था वहां पे बहुत सारा. तो देखते हैं चलो. और पहले मैं बता चुकी हूँ ये इस तरह वाला क्वेश्चन जो होता है ना, ये वाला स्पेसिफिकली कैट डजंट गिव सच अ क्वेश्चन. और अगर आता भी है प्लीज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन. एम्बिग्विटी हमेशा रहती है उसमें. अगर बहुत आसानी से एलिमिनेट हो रहे हैं ऑप्शंस तो गो फॉर इट. ओके, नाउ व्हाट डज इट से? थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें. पहला पैरा है इतना बड़ा, बट आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल ऑफ इट. बीच का स्किमिंग करूंगी. द क्वेश्चन दैट फेसेस अस इज हाउ वी थियोरेटिकली एडमिट एंड थेमेटाइज द शेपिंग अप ऑफ द आदिवासी. Okay, we all know Adivasi, marginalized communities. They keep fighting for their rights as the political agent par excellence in our colonial and this. How we admit and thematize shaping up of the Adivasi as a political agent par excellence at a good level in our colonial and post-colonial modernity. At one level, this phenomenon seems easy to explain. Seems easy to explain. आगे author बोलेगा but probably it is not. The Adivasi, the so-called primitive. Primitive is what? Indigenous. एकदम early वाला types. एकदम native, local. Acquires a critical political edge in our context because it is in counterpoise to her that the modern is defined as modern in the first place. ठीक है, ये हर किसको बोला ये मेरी समझ नहीं आया यहाँ पे. A critical political edge in our context precisely because it is in counterpoise to something. रहने दो इसको, कोई बात नहीं, यहाँ पे छोड़ दो. हाँ. Modern in the first place. The primitive thus becomes for the colonized the final and inappropriable sign of the nation's difference. जो भी है तो यहाँ पे West वगैरह सब लेके आया है. But then one could demonstrate that even in the West the primitive repeatedly appeared. Okay, theorizers of this, something. He brings in names. Not surprisingly, now I'm going to read from here and see what the passage says. Not surprisingly, within Europe itself, the rise of modern governmental technologies required the reformulation. Underclasses, wild and primitive, who needed to be morally and temporally disciplined. Okay, तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? Not surprisingly, again, the primitive was invoked. So he's trying to take us back to history and show that time and again the primitive was invoked. European modernity, the governments tried to make the primitive group became the center of all modern concepts. They tried to reposition these primitive people. Why? For political purposes. ये है इतना जो इसने यहाँ इतने लंबे चौड़े में बकवास करके बोला है. ठीक है, यहाँ देखो आप लास्ट लाइन में क्लियरली आपको समझ में आएगा. Primitive was invoked in European modernity as a mark of the free state of nature, which acted as a powerful political critique in theorizers like this of contemporary this inherited power and political oppression. Some political games. Okay, usme governments have actually depended on these Adivasi communities, primitive communities जिनको बोला गया है time and again.
और ये इसने पूरा अलग अलग दिखाया है। ये देखो, वेस्ट में प्रिमिटिव रिपीटेडली अपीयर्ड, क्रिटिक ऑफ दिस एंड इट्स पैथोलॉजीज, मॉडर्निटी के डिजीजेस। अब उसके बाद देखो 18th एंड 19th सेंचुरी बिकेम द सेंटर, कैसे कैसे रिपोजिशनिंग की गई उसकी, यही मुद्दा दिखा रहा है यहां। बट देन द हार्नेसिंग ऑफ द आइडिया ऑफ द प्रिमिटिव became possible only with what he calls fictionalizing of the aborigine. Aborigines वही होते हैं जो primitive people, the natives of a particular land, by which the wild became another. फिर वही बकवास, ठीक है, functioned as a fetish. Fetish is what? Fetish is something that you really like. I've got a fetish for shoes, ऐसा type, with magical powers and something. अब आप सोच के देखो, अगर आप ये पढ़ना शुरू करते हो आपको कुछ नहीं समझ आएगा यहां से, तो क्यों उसके पीछे दिमाग खराब करना है आपने। 4 क्वेश्चंस हैं, 4 में से जरूरी नहीं 4 के 4 कर लेंगे, अगर टेस्ट में 2 करके निकलो ना भाई। कौन से 2 करेंगे हम? जो 2 आपको स्पेसिफिक वाले हैं, ठीक है, विथ मिनिमम रीडिंग वी कैन हैंडल दोस। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन उसमें चाहिए होगा, मेन आइडिया क्लियर होना है आपको, राइट। आई विल टेक यू टू द लास्ट पैरा। अब यहां देखो, अब ये क्या कह रहा है, हाउ देन इज द प्रिमिटिव्स पॉलिटिकल एजेंसी एक्सप्लेन्ड। नाइस, अब समझ आया थोड़ा सा फ्लो। फलाका 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 फलाका, फिर आदिवासी से जो स्टार्ट किया था, नाउ ही कम्स टू दिस, वेस्ट वेस्ट सब हो गया, यूरोप हो गया, सब हो गया। हाउ देन इज द प्रिमिटिव्स पॉलिटिकल एजेंसी, एजेंसी इज नॉट गैस की एजेंसी खोल के, नो, प्रिमिटिव्स पॉलिटिकल एजेंसी, पॉलिटिकल उसका उसकी आइडेंटिटी, पॉलिटिकल उसका स्टेचर, पॉलिटिकल उसको क्या रैंक दिया जा रहा है, पॉलिटिकल पोजीशन क्या दिया जा रहा है, ये एक्सप्लेन्ड इन अवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। My argument is that our historical and political discourses, ये हो गया, इतना पढ़ लिया आपने, अभी आप स्किम करो यहां आदिवासी पॉलिटिक्स, ये वो, अच्छा, implication of this is clear, ये पढ़ना होगा मुझे। क्या है implication? If labeling something as political is to impute, okay, fine, something culture after all as a matter of habit, not accidentally, therefore, parallel to the textualization of the tribe, 19th century onwards has been the textualization in our this bakwas, complete bakwas, ठीक है। सेम चीज को इजी लैंग्वेज में दे सकते थे, थोड़ा सा कम, इतना गंदा लैंग्वेज, बट अब आप ना कितना भी आपने अपना वोकैबुलरी इंप्रूव कर लिया है, दिस पैसेज इज गोइंग टू कम एज अ बमर टू यू, अगर मान लो ये टेस्ट में है तो, ओके। सो हियर if I try to explain the entire passage to you, that is not going to resolve your situation. हम मेन आइडिया निकालेंगे, मेन आइडिया निकाल के क्वेश्चंस कैसे हैंडल करना है, we have to think of that. So the flow of the passage is, he talks about, यहाँ पे आदिवासी he starts, primitive he starts, then he takes us back into the pages of history and he shows the chronology. Primitive को कैसे कैसे आगे political उसके लिए reposition किया गया था, कैसे depend किए governments, harnessing, ये देख रहे हो, harnessing of the idea, यूरोपियन मॉडर्निटी, ये अगेन यूरोपियन वाला ही पूरा चला यहाँ पे, नेशनलिज्म, ये वो समथिंग, ठीक है, हेजेमोनिक डिस्कोर्सेस, हर लाइन में तो 5-5, 6-6 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इवन कैट एस्पिरेंट्स विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस पैसेज बाय रीडिंग इट कंप्लीटली, क्योंकि भाई बच्चे ही हैं, ठीक है, उतना पूरा इतना 100% वोकैबुलरी नहीं होती है। अब यहां अगर हम लास्ट में आते हैं तो इट मेक्स सेंस टू अस कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है। So my brain tells me कि भाई तू ना फर्स्ट पैरा का फर्स्ट 3-4 लाइंस पे ज्यादा फोकस करियो, और यहां अगर जरूरत पड़ी तो I'll come to this because this is what the author is trying to drive home. सब दे के बता के वो कह रहा है how then, तो फिर ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में how do we explain it? This is his मुद्दा by giving you those contexts. इसमें क्या बोला है, वही है कि politically इनको यूज किया गया है। My argument is that our historical explain the so called this through what can be called a culturalization of the tribe. उनको culturalize किया गया, they were given some cultural standing with grave implications, word देखते ही tone आ गया, not only on आदिवासी politics, okay, ये इधर से कटा हुआ भी है टेक्स्ट, why not, अच्छा, not only यहां ये right, not only और आदिवासी पॉलिटिक्स but also for, ये for होना चाहिए, not only for आदिवासी पॉलिटिक्स but also for our politics in general, अच्छा for है, ठीक है,
ठीक है. In our contemporary common sense it appears okay. Intractability of the Adivasi. Intractability, कौन होता है intractable? People who are inflexible, people who are not willing to move, उनकी बात कर रहा है. Okay, it's primarily her cultural habit. Politics thus is explained as culture. ये short sentence ये देख लो. Implication इसका क्या है? Clear है. क्या है implication? If labeling something as political is to impute to it a deliberate and this agency, a kind of voluntarism, something, and उसने यही पूरे में end तक भी यही बोला है, is a matter of habit and this, not accidentally. Therefore, textualization of the tribe, आप उसको text में डाल रहे हो सिर्फ, as a perpetually insurgent being, पूरे all along you have shown insurgent, rebellion. Okay, rebellious creatures हैं ये. You have shown in text that Adivasis, indigenous communities, these are forever rebellious people. 19th century onwards has been the textualization in our political this, ethnos, done. ठीक है, so textualization गलत हुआ है, कुछ something इस तरह का author की बकवास है. Now I'll take you over to the questions. हमने करना कौन कौन सा? पहले तो I would like to do this. Why does the author write the primitive in European modernity functioned as a fetish? I'll take you back to this. ये ठीक है, इसको क्लियर कर देती हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ अंडरलाइन. ये अब देखो यहाँ करना क्या है. स्टे काम. फेटिश का मीनिंग पता होना चाहिए, राइट? जो भी चीज का मीनिंग आपसे पूछा जाता है वहां इन्फरेंस फॉर्म में या वर्ड या फ्रेज के फॉर्म में, अगर आपको लिटरल मीनिंग नहीं पता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. फाइन. तो यहां पूछा है फंक्शन एज अ फेटिश, उसका मीनिंग आगे दिया भी है. इट्स अप टू यू टू इंटरप्रेट. व्हाट एम आई गोइंग टू डू? 2 lines up, 2 lines down. आई एम गोइंग टू रीड द इंट्रोडक्टरी लाइन ऑफ द पैरा एज वेल. ठीक है. बट देन द हार्नेसिंग became possible only with calls the fictionalizing of the aborigine by which the wild man became another, an absence, an entity. ये पता है क्या कहना चाह रहा है? Fictionalizing of the aborigine. उसको अबोरिजिन को, जो इंडिजिनस था, जो प्रिमिटिव था, उसको आपने फिक्शन बना दिया. मतलब ही जस्ट अपीयर्ड इन टेक्स्ट्स. ओके. और आपने उसको बिकेम अनदर. अनदर बोले तो वो ही इज नॉट पार्ट ऑफ अस, ही इज देयर, कहानियों में है. एन एब्सेंस, एन एंटिटी आउट देयर इन अदर लैंड्स एंड अदर टाइम्स. हमारे एरा में नहीं रहता भाई, ये होगा कहीं होगा, राइट? ये हो गया. फिर यहां आते हैं. देन in other words, the primitive in European modernity functioned as a fetish. What is a fetish? Something that you desire, something that you crave for, you have a liking for that, with magical powers and libidinal potentials. Magical powers. Oh, so they were not part of us. ये तो बिल्कुल ही different, other, right? But therefore necessarily as a political idea which was founded on acts of displacement, externalization, colonization, blah blah. अब ये चूंकि बोला है in other words, I need to read the first words. First statement क्या था, तब उसको तो explain किया ना इसने. in other words, it was only thus that the noble savage could be repeatedly invoked without it automatically becoming amongst an undoing of colonialism. Means time and again these primitive people, the culture was invoked, but they were treated as the other. Still they were fictionalized in text. ये इतना समझ आया हमें, ठीक है? We go back to this now. The Europeans had a romanticized affinity to magical powers and libidinal potentials of primitive people. This is what I call distortion. Europeans had a romanticized affinity. Tone पूरा change हो गया. They had a liking to magical powers and libidinal potentials of primitive people. नहीं, उनको अदर समझा जाता था, उनको नॉन एग्जिस्टेंट समझा जाता था, उनको कुछ weird टाइप का समझा जाता था. People with magical powers and libidinal potentials. That doesn't mean the Europeans had a liking to this of these people. ये complete distortion. Okay. Then the Europeans, though modern, possessed favorable outlook towards. ये तो बिल्कुल ही tone change ना. Out. For the Europeans, the primitive people were useful instruments. Political. They were invoked time and again. The Europeans considered the primitive people unnecessary. ना जी ना. Unnecessary होते तो फिर तो उनको बार बार invoke ही नहीं किया जाता. They were necessary. उनके कंधे पे रख के बंदूकें चलाई जाती थी. Right? So ये eliminated and going with the flow.
This is the answer. Nice question. And इसमें options में like there was this challenge कि अच्छा कौन से basis पे आप eliminate कर रहे हैं. Okay, so ये हो गया हमारा C. ठीक है. Then हाँ ये करेंगे हम number 2 क्योंकि again specific inference है. Why does the author write this clearly should not be the case with India's experience? Okay. India's experience, this clearly should not be the case. Okay. It is okay. Indian context यहां दिया है. All right. या तो फर्स्ट पैरा में होगा, है ना? आदिवासी. सो ये वाले क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू लुक फॉर इट कि कहां है ये. ठीक है. India's case. This clearly should not be the case at one level. This phenomenon. Okay. Nations difference. All right. Okay. Here. यहाँ. ठीक है. So, what does he say here? ये यहाँ तक तो we just read for that other question and we understood political instruments थे, है ना? अब ये कह रहा है this clearly could not be the case with India's experience of modernity. For here in the colony, the so-called primitive continued to exist in threatening contemporaneity with the self-conscious modern subjects of history. Threatening contemporaneity. Matlab, these people were there, they were kind of being the rebels, they were kind of objecting to what the modern era was doing in India. Yeah. Self-conscious modern subjects of history. Elsewhere, I have shown how nationalism, in fact, history writing itself, okay, in India got formulated through this discomforting experience of the primitive within. Right? So, in India necessarily worked as much more than an instrument of this. Here he or she came across as a concrete subjectivity, a counter agency, rebels, so to speak, and therefore could never be reduced by hegemonic discourses of modernity and civility to a sign or only to a fetish. ये जो यहाँ बोला है इसने. ठीक है? तो इंडिया में they could not be reduced. Why? Because they had their own identity. This is what I understand from here. I'll take you back to the question. Now, why does the author write this? The author thinks that in the colonies, the primitive is a part of conscious subjects with political agency. Okay? Primitive, conscious subjects दिया है वहाँ, they have their own agency with political agency. ठीक है? Okay? The author thinks that in the colonies, the primitive becomes an object of colonial modernity's hegemonic discourse. Becomes an object of, no, he says it has to go beyond that. Right, ये बोला है ना? ये. A counter agency and therefore could never be reduced by this. So this is opposite of what is given. Right? Opposite. Eliminated. The author thinks that the Indians did not consider the primitive people unnecessary for modern civilization. Indians considered or did not consider necessary, unnecessary, that is not there. वहाँ दिया है कि these people had their own agency and they could not be reduced to merely being a fetish. वो जो fictional magical type का ना, they could not be reduced that way. Considered necessary or unnecessary, did not consider. चलो इसको रख लेते हैं. It's between A and C. The author thinks that colonies are different bakwas. So it's between A and C. Right. What do we do when we are left with two options जिसके बीच में tug of war है? We take one and go back and prove it. The author thinks that in the colonies, part of conscious subjects with political agency. Okay. Go back to this portion and check it out. Conscious word मुझे अच्छा लग रहा है इसमें. Got formulated through this, for our purposes here, sufficient to acknowledge, necessarily worked as much more than an instrument of this. Okay. As much more than this. ठीक है. Here she came across as a concrete subjectivity, a counter agency. Okay. ये हो गया और यहाँ पे this clearly could not be the case with this. For here in the colony, ये दे रखा है, the so-called primitive continued to exist in threatening contemporaneity, okay, opposition type का, with the self-conscious modern subjects of history. Elsewhere I have shown how nationalism, okay. So conscious के हिसाब से
I would go with this. Between these two, you don't try to eliminate again. Between these two, you just see which one has better words, go and match and try to prove it. So this is good. Give me a moment, guys. Yes, okay. So, where were we? हाँ, ये हमारा 2 questions इसमें से हो गए, ठीक है? These were like doable. समझ में आया हमको, ठीक है, इसको कैसे निकालना था. Right, now we go to this. Which of this can be inferred from the passage? Now, we are looking for one true. Yeah, we are looking for one true and 3 false. So, अभी तक हमें पता है कि ठीक है, political agency and this and that and rebels and fetish and ये सब की बात की है इसने. Now, which of these can be inferred from the passage? The author is likely to support the textualization of tribe as a culture. Textualization. The author is likely to support the textualization of tribal insurgency as a culture. The author thinks that culturalization of tribes strips it of its agency. Okay, the author remains detached on the issue of culturalization and politicization of tribes. अभी आप समझो यहाँ पे करना क्या है. Thinks ये है, ये remains detached. Remains detached simply means he is neutral. उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. He remains detached on the issue. मुझे एक बात बोलो, अगर ये आपका डिटैच था, why has he written so much about it? ये दिमाग में आना चाहिए, राइट? कि क्यों लिख रहे हो तुम, इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? So detached, parallel, okay. 19th century has been the textualization in this, right? तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपने इतना सा पढ़ लेना होगा. Matter of habit does not necessarily assume the kind of purposive and self-reflexive positioning that political act presumes. Not accidentally, therefore, parallel to the textualization of the tribe as a perpetually insurgent being, दिखाया जाता है insurgent, 19th century onwards has been the textualization. क्या और आया? Textualization in our political historical discourses, the ethnos. As above and beyond all an alternative culture, एक अलग उनको दिया गया कल्चर का स्टेटस, ठीक है? So in my opinion, this should not be there. ये आपका remains detached. Cool, ये हटा दिया हमने. अब एक elimination है. Now look at the other three options very clearly. इसमें बोला है likely to support the textualization of tribe as a culture. Is he supporting the textualization as a culture? The author is likely to support the textualization of tribal insurgency as a culture. ये दोनों होपफुली लग रहा है कि इनमें से ही कुछ होना चाहिए. हल्का हल्का सा डिफरेंस है, ये कैट में कभी कभी ऐसा पैटर्न होता है. The author thinks that culturalization strips it of its agency. Does the author say okay, does the author say that it kind of strips it of its agency? Textualization, culturalization होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, right? ये तीनों में ऐसा लग रहा है कि these two can be the answer. इनमें से मतलब कोई एक आंसर होगा, because इसमें हल्का हल्का सा डिफरेंस है. Likely to support of tribe as a culture, likely to support the textualization of tribal insurgency as a culture, and this says culturalization strips it of its agency. उसकी इंडिविजुअलिटी ही खत्म कर देता है. तो अभी इन तीनों में कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको विथ लेस टाइम. ये दिया है आपको, दिस इज समथिंग डिफरेंट. कल्चरलाइजेशन स्ट्रिप्स इट ऑफ इट्स एजेंसी. कल्चरलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है? दिस इज व्हाट आई नीड टू गो बैक एंड चेक. अब यहां पे इस पैरा में आ जाओ, ठीक है? Primitives, agency explained Indian context, okay. Primitives policy, okay. Political alterity. The implication of what is thus explained as a culture. Just follow what I am doing, ठीक है? Thus explained as culture. Does the author want it? पता नहीं. So implication बोला है. Implication is how it affects us.
is clear. If labeling, you see this word, labeling something as political is to impute to it a deliberate and conscious agency, a kind of voluntarism, right? To immediately gloss it over as cultural also immediately erases this aspect of this. Finished. We get the answer there. भाई कल्चरल आप दे रहे हो, आप इसने बोला लेबलिंग समथिंग एज पॉलिटिकल, वो उनको खराब, उनको कनेक्शन खराब वो कर रहा है. डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एजेंसी इज टू इम्प्यूट टू इट, राइट, इम्प्यूट टू इट अ डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एजेंसी, अ काइंड ऑफ वॉलंटरिज्म टू ग्लॉस इट ओवर एज कल्चरल ऑल्सो इरेजेस दिस एस्पेक्ट. तो उनका जो एजेंसी है वो तो इरेज हो जा रहा है कल्चर से. Culture, after all, is a matter of habit, something which does not assume the kind of purposive and this that a political act presumes. तो culture तो वो assume कर ही नहीं रहा है, जो purposive है, self reflexive है, positioning वो तो दे ही नहीं रहा है culture. So in the end we understand the author is not exactly supporting this point कि culturalization होना चाहिए. So the author thinks that it is given there exactly but in different language, so rephrase करके भाई ये तो आ जा रहा है, ठीक है. So I'm not going to check these two. I just showed you कि भाई इसमें ये different मुझे ये लगा. Culturalization मुझे पता है कि last में दिया हुआ है, so I can just go and read that portion and come up with my answer, ठीक है. अब ये आप देख लो. The above passage is taken mostly from what? Okay. अब इसमें एलिमिनेशन करके मैं आपको बताती हूं, एंड देन इफ देयर इज एन एम्बिग्विटी आई विल टेल यू. अ न्यूज़पेपर op-ed पीस ऑन करंट इवेंट, जर्नल ऑन हिस्ट्री, अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट. यार रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट इतना डेंस नहीं होगा, कॉमन मैन तो समझ ही नहीं पाएगा, राइट. सो दिस हैज टू बी op-ed, एड समथिंग, या कोई थीसिस, जर्नल, कुछ ऐसा. सो अ जर्नल ऑन हिस्ट्री, अ न्यूज़पेपर op-ed पीस ऑन करंट इवेंट, अ गवर्नमेंट कमीशन रिपोर्ट ऑन द कंडीशंस ऑफ आदिवासी. नहीं, गवर्नमेंट कमीशन रिपोर्ट तो डेफिनेटली आउट है, बिकॉज ऑन द कंडीशंस ऑफ आदिवासी के लिए यू वोंट शो सो मच क्रोनोलॉजी एंड स्नीक पीकिंग इनटू यूरोपियन एंड अमेरिकन एंड कहां का उसने जो दिया था, यूरोपियन मेनली, मॉडर्निटी एंड ऑल, दिस इज आउट. आई एम लेफ्ट विद दीज टू. op-ed पीस ऑन करंट इवेंट, इवेंट अगर है तो क्या हुआ है, जर्नल ऑन हिस्ट्री. ओके, नाउ आई टेल यू दिस, आई वुड नॉट बी एबल टू डिसाइड बिटवीन दीज टू. Okay, why? Because a newspaper op-ed piece on current event, maybe there is something that has happened, but यहाँ मुद्दा ये होता है कि अगर op-ed piece on current event है, this looks very attractive to me. पूरा उसमें ना उसका क्या कहते हैं उसको, opinion दिया हुआ है उसका, कि somebody has written like very strongly about culturalization and all. But my question here is, अगर ये op-ed piece है current event का, where is that current event? कुछ तो मेंशन करना चाहिए ना. इन नवंबर सो एंड सो दिस ईयर, और इन अक्टूबर सो एंड सो दिस ईयर, और लास्ट वीक the thing that happened or the event that took place in one village of Himachal clearly brings this to the foreground. समझ रहे हो आप ये? तो ये आपका op-ed piece on current event looks very attractive, but कहाँ है current event? So इन दोनों के बीच में yes, it would be a little difficult to decide अगर आपको op-ed piece का meaning नहीं मालूम है. But again I'm saying कि इसमें current event as such mentioned नहीं है पूरा, कि किसकी वजह से the author is writing this. op-ed क्या होता है? op-ed वही होता है कि like there is something that has happened and a particular writer is giving his thoughts on it. तो ये तो नहीं है इसमें, right? So मेरे पास जो बचा that is this, a journal on history. ठीक है, ये जस्टिफाइड भी है, अ जर्नल ऑन हिस्ट्री. वाई? बिकॉज आपको यूरोपियन पूरा ऐसा क्रोनोलॉजी दिखा रहा है पूरा, एंड सीक्वेंस दिखा रहा है, यूरोप कहाँ क्या हुआ, कैसे टाइम एंड अगेन दे वर रीपोजिशन. सो हिस्टोरिकल एंगल है, करंट वाला नहीं है. सो यस, ये है. बट थोड़ा सा डिसाइड करना, लाइक इट वुड टेक यू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. सो इन केस यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस क्वेश्चन. रेस्ट आई होप इट्स क्लियर. ओके, थैंक यू.